Hello everybody, welcome back to my channel. This is the second video of Periodontics part 2, and we are talking about synopsis, which is very important. So in the previous video I have talked about curates, a lot of curates, modified curates, mini bleeded curates, and after 5 curates, general basic differences between Gracie curates, universal curates, and I also talked about American modified curates. Now in this video I'll be talking about Langer and mini Langer curates, एंड फर्दर मोर इंस्ट्रूमेंटेशन आई बी टॉकिंग. सो पुरानी वीडियो थोड़ी छोटी हो गई थी बिकॉज कुछ एरर की वजह से कट हो गई थी. सो आई विल ट्राई टू मेक इट कंपनसेटेड इन दिस वीडियो. एंड द पीपल हु आर न्यू इन माई चैनल, आई वॉन्ट टू से दैट if you're doing it dentistry, you want to get some knowledge, you're preparing for any exams, you are at the right place. You just subscribe to my channel and hit the notification button so that you get notified every time I upload a video for you, as well as I will be uploading good motivational shorts for you so that you will be motivated all the time. Okay, so let's get started. लैंगर एंड मिली लैंगर क्यूरेट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो आपको एक बार इमेज दिखा देते हैं. You can see the image. We have 4 Langer curates, 4 designs available: half, 3/4, 5/5, 6, and 17th, 18th. You can see the images. Different images are here. Okay, so when you see the pulse, okay, so there are not 4 actually. There are 3 curates. So, but we have some special designs in the Langer curates. Like these 3 curates combine the shank design ऑफ द स्टैंडर्ड ग्रेसी क्यूरेट्स. शैंक इनका सेम रहता है जैसे कि स्टैंडर्ड ग्रेसी क्यूरेट्स का रहता है, विद यूनिवर्सल ब्लेड एट एंगल ऑफ 90 डिग्री रादर देन द ऑफ साइड ब्लेड ऑफ अ ग्रेसी क्यूरेट. ठीक है, यूनिवर्सल का तो ब्लेड है इसके अंदर, और स्टैंडर्ड ग्रेसी क्यूरेट्स जो है हमारी, इनका शैंक है इनका. ठीक है, दिस अलाउज द एडवांटेज ऑफ एरिया स्पेसिफिक शैंक टू बी कंबाइंड विद वर्सैलिटी ऑफ यूनिवर्सल क्यूरेट. सो दीज लैंगर क्यूरेट्स आर मच मोर वर्सटाइल. क्यों? क्योंकि इनका जो शैंक है वो तो ग्रेसी क्यूरेट्स वाला है, लेकिन इनका जो ब्लेड है वो यूनिवर्सल ब्लेड है. तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इनकी वर्सटाइलिटी है, बिकॉज दिस अलाउज फॉर एडवांटेज ऑफ एरिया स्पेसिफिक शैंक प्लस यूनिवर्सल क्यूरेट. आपको बार बार क्यूरेट्स बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिफरेंट एरियाज़ के लिए, बिकॉज आपका जो शैंक है वो यूनिवर्सल है. सॉरी, ब्लेड आपका यूनिवर्सल है, लेकिन आपका जो शैंक है वो ग्रेसी क्यूरेट्स का है. तो 3 टाइप की यहाँ पे दिखाई हुई है हमें, 5/6, 1/2 एंड 3/4. जो 5/6 है वो मीजल डिस्टल्स ऑफ एंटीरियर्स के लिए यूज़ करते हैं, 1/2 को हम मीजल डिस्टल्स ऑफ मैंडिबल पोस्टीरियर्स के लिए यूज़ करते हैं, और 3/4 को हम मीजल डिस्टल्स ऑफ मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ के लिए यूज़ करते हैं. तो मैक्सिलरी मैंडिबुलर पोस्टीरियर्स के लिए अलग अलग हैं, बाकी इंटीरियर्स के मीजल डिस्टल दोनों के लिए सेम है. याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है कि एंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है, बट थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा. एक बार अगर याद हो जाएगा सो इट विल बी हेल्पफुल, कि आपको बाद में इसको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. पोस्टीरियर्स के लिए हमेशा ही 2 होते हैं, एंटीरियर्स के लिए ऑलमोस्ट 1 ही होता है. तो एक 5/6 नंबर है, एक 1/2 है, एक 3/4 है. अब हम इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में बात करेंगे, उनके एंगल्स के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मान लो स्केलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, रूट प्लेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो क्या एंगल है, क्या एंगल इम्पॉर्टेंट है. जब ब्लेड इंसर्ट होता है, ठीक है, ये बहुत बेसिक है कि नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में जो ब्लेड है जब वो इंसर्ट हो रहा होता है तो उसका जो इंसर्शन एंगल होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है. ऐसा कुछ नहीं होता कि देयर इज सम एंगल फॉर इंसर्शन, इट्स सपोज टू बी 0. बट एंगुलेशन फॉर स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग के लिए उस इंस्ट्रूमेंट में ऑलमोस्ट 45 to 90 डिग्री तक का एंगल होना चाहिए. ठीक है, 45 to 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, दोनों के बीच में होना चाहिए. 50, 60, 70 डिग्री कुछ भी दोनों के बीच में होता है, ना 45 से कम ना 90 से ज़्यादा. तो स्केलिंग और रूट प्लेनिंग के लिए हमें ये एंगल चाहिए होता है. क्यूरेट आर्च के लिए हमें 90 डिग्री से ज़्यादा चाहिए होता है. यूनिवर्सल क्यूरेट्स हम बात कर चुके हैं, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. ग्रेसी क्यूरेट्स की हम बात कर चुके हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट 60 to 70 के बीच में होता है. एंगल बिटवीन फेस एंड लेटरल सर्फेस ऑफ ब्लेड. देखो जो ब्लेड होता है ना, फेस जो उसका फ्रंट पार्ट होता है उसको फेस बोलते हैं. जैसे कि मान लो ये एक हमारा ब्लेड है, दिस इज़ द ब्लेड, और ये फेस पार्ट है उसका. ठीक है, और ये उसके
साइड्स हैं, लेटरल साइड कह सकते हो आप। तो एंगल बिटवीन फेस एंड लेटरल साइड, जो ये एंगल बना इनके बीच में, इस और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, वो जो एंगल है दैट शुड बी बिटवीन 70 to 80 डिग्रीज। ठीक है, फेस और लिटिल सरफेस के बीच में 70 to 80 डिग्रीज का एंगल होना चाहिए। शार्पनिंग की अगर हम बात करें तो 100 to 110, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ब्लेड फॉर हो इज बेंड एट 99 डिग्रीज। आगे हम जाके पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, उसमें हो इंस्ट्रूमेंट आता है, उसमें ऑलमोस्ट 100 डिग्री का एंगल होता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ग्रेसी में कितना एंगल है, यूनिवर्सल में कितना एंगल है, क्यूरेटाज के लिए कितना एंगल चाहिए होता है, स्केलिंग रूट प्लेनिंग के लिए कितना एंगल रहता है इंस्ट्रूमेंट्स में, ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 इज़ लाइक प्रोफेशनल prophylaxis with prophylaxis is used to remove stubborn stains. This consists of air powder abrasive system with sodium bicarbonate and warm saline water jet. It should not be used in patients with respiratory illnesses, infections, and sodium restricted diets. So there is something called as prophylaxis. This is a picture of prophylaxis which is mainly used to remove the stubborn stains. दांत पे जो stains लग जाते हैं उनको रिमूव करता है। एयर एब्रेसिव सिस्टम होता है इसमें रिमूव करने के लिए, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि जो लोग रेस्पिरेटरी इलनेस जिन लोगों में रहती है उनमें हम ये यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 दैट इज ट्रीटमेंट प्लान। ट्रीटमेंट प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, आपको पता भी होना चाहिए। प्रिलिमिनरी फेज़ क्या होती है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। फेज़ 1 को क्या बोलते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ईटोट्रॉफिक बोल देते हैं, प्रिपरेटरी फेज़ भी बोल देते हैं। फेज़ 2 को क्या बोलते हैं, सर्जिकल फेज़। फेज़ 3 को रेस्टोरेटिव फेज़ बोलते हैं। फेज़ 4 को हम मेंटेनेंस फेज़ बोलते हैं। बहुत बात पूछा जाता है, जस्ट फेजेस के नाम ही आपको पता होने चाहिए। जो फर्स्ट फेज़ है दैट इज़ इमरजेंसी। कोई भी इमरजेंसी, कोई बंदा बहुत ज़्यादा पेन में है या फिर कोई एक्सीडेंट है, कुछ भी है, उसमें जो एक्सट्रैक्शंस वगैरह होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। इन सीज़न ऑफ एब्सेस, अगर बहुत ज़्यादा पस है, कोई रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज वगैरह कर रही है, पस को इंसाइज करिए फटाफट। कोई ऐसा दांत जिसको एक्सट्रैक्ट ही करना पड़ेगा और कोई पॉसिबल वे नहीं है, वो सब चीज़ें हमारी इस फेज़ में आती हैं। नेक्स्ट जो फेज़ है हमारी, फेज़ 1 है। आई एम सॉरी माई बैटरी इज़ रियली लो, सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक लाइक फॉर अ डिम लाइट। ओके, आई विल कंटिन्यू। फेज़ 1 जो है वो हमारी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लाक कंट्रोल करेंगे। ठीक है, बंदे को अगर प्लाक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो प्लाक कंट्रोल मेजर्स हम यूज़ करेंगे। डाइट कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, स्कीलिंग करेंगे, उसकी रूट प्लेनिंग वगैरह करेंगे। टेम्प्रेरी रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं इसके अंदर। फेज़ 2 की अगर बात करें, जो सर्जिकल फेज़ होती है, उसमें एक्चुअल सर्जिकल प्रोसीजर चलते हैं, जैसे कि इम्प्लांट्स हो गए, RCTs हो गई, बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं। रेस्टोरेटिव फेज़ में हम रेस्टोरेशंस एज अ नेम इज सजेस्टिंग, बट फाइनल रेस्टोरेशंस, परमानेंट रेस्टोरेशंस करते हैं, फिक्स्ड रिमूवेबल डेंचर्स देते हैं। एंड मेंटेनेंस फेज़ में हम क्या करते हैं, पीरियोडिकली रिकॉल करते हैं पेशेंट को, बार बार आके चेक करवाइए ताकि जो प्रॉब्लम है वो दोबारा तो नहीं हो रही। तो ये जो 5 फेजेस हैं ये सारी के सारे आपको पता होने चाहिए। प्रीलिमिनरी, फेज़ 1, 2, 3, 4, सारी के सारी इनके नाम आपको पता होने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सूचर टेक्निक्स। ठीक है, बहुत सारे बेसिक सूचर्स ओरल सर्जरी में आप पढ़ोगे, प्लस आप पेरियो में भी पढ़ते हो सूचर टेक्निक्स। डायरेक्ट लूप, फिगर ऑफ 8, एंकर सूचर, स्लिंग लाइगेचर, हॉरिजॉन्टल मैटर सूचर, पेरियोस्टल सूचर। ठीक है, तो okay, so you can see here this is a direct loop suture, just simple, nothing, a loop. Then you can have a look on figure of 8 suture. This is how figure 8 looks. Okay, it just, अगर आपका ये एक्सट्रैक्शन सॉकेट है तो जो आपका सूचर रहेगा that will just probably look like this, something like this. That is figure of 8. Okay, talking about horizontal mattress और vertical mattress suture. So horizontal mattress suture में क्या होता है, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, कोई भी इंसिजन है, दिस इज़ अ स्किन and this is the skin also, and we are going to ligate it. This is the something
वूंड टाइप एरिया. सो ये जो सूचर हम बंद करेंगे ना, ये जो सूचर्स लगाएंगे इसके ऊपर, वर्टिकल मेट्रस में एक बात याद रखना, जो भी इंसीजन है उससे वर्टिकल जाती है सूचर्स, दैट इज़ वर्टिकल मेट्रस. एक हॉरिजॉन्टल मेट्रस रहती है, उसमें क्या होता है, इसी में ही ऐसे जाती है सूचर. ये तरीका याद करने का बता रही हूँ, ठीक है. लेकिन आपको बेसिकली अगर पता ही नहीं है वर्टिकल मेट्रस क्या है तो दिखा देते हैं. दिस इज़ हाउ इट लुक्स, वर्टिकल मेट्रस सूचर. ये जो इंसीजन लाइन है आपकी, ये इसके बिल्कुल वर्टिकल जाता है ये सूचर, ठीक है. वहीं पे हॉरिजॉन्टल मेट्रस सूचर ऐसे होएगा, समझ गए. दिस इज़ हाउ हॉरिजॉन्टल मतलब इट लुक लाइक्स दिस बट इट्स एक्चुअली इंटरप्टेड. इंटरप्टेड में क्या होता है, इंटरप्टेड में ऐसा होता है, हर एक सूचर में अपनी नॉट होती है क्योंकि हम उसको कट कर रहे होते हैं, दैट इज़ इंटरप्टेड. बट कॉन्टीन्यूस अगर आप देखोगे तो कॉन्टीन्यूस में कोई नॉट्स नहीं होती. दिस इज कॉन्टीन्यूस हॉरिजॉन्टल सूचर, मतलब ये लाइन है. सो इट विल गो लाइक दिस, इंटरवल्स में इट गो लाइक दिस. आई होप यू विल गेट इट. Okay, so I told you some sutures like direct loop when the bone grafts are used and when there is need for coverage of interdental bone with interdental papilla, we use direct loop. Important thing, that is interdental bone and interdental papilla coverage. Figure of 8 when the slabs are not in close opposition and because of apical displacement of flap or non-scalloped incisions. डिस्प्लेसमेंट अगर है फ्लैप की तो फिगर ऑफ 8 यूज़ करना पड़ेगा. एंकर सूचर कब यूज़ करेंगे, क्लोजिंग फ्लैप मीजल और डिस्टल टू टूथ एज इन मीजल और डिस्टल वेज प्रोपोर्शंस, दैट इज एंकर सूचर. स्लिंग लाइगेचर इज व्हेन द फ्लैप इन्वॉल्विंग टू इंटरडेंटल स्पेसेस एंड अपोजिंग फ्लैप नॉट रिफ्लेक्टेड. I'll make you see the pictures. Horizontal mattress is used in wide interdental spaces to properly adopt the interproximal papillas against the bone, and periostal one is used to hold the patient thickness apically distal flap. It's partial thickness, okay, to hold the partial thickness apically of a apically displaced flap. That is where periostal is used. This is how periostal suture is supposed to be. Okay, can you see the image? It is used to hold apically displaced partial thickness flaps on periosteum. जो भी apically displaced partial thickness flaps होते हैं उनको उनके लिए यूज़ किया जाता है periostal suture. And holding suture horizontal mattress at the base of displaced flap to secure it into place. Closing suture used to secure the flap edges to the periodontium. This is how supposed to be a sling ligature. Can you see this image? Sling ligature. This is a proper way to do this sling ligature. Okay, so when flaps, for sling ligature, when flaps involving two interdental spaces and opposing flap not reflected, then we use sling ligature. Okay, so on the table number 11, a number of microbes and the new names have been proposed. You should know the new names as well as the old one also, because they can come as it is in your exams. Like bacteroides gingivalis, also called as Pyphoromonas gingivalis, which is very important when you will study periodontitis and all this. So in pathogenesis, these organisms, it will always tell you P. gingivalis, but P. gingivalis is actually bacteroides gingivalis. You should know this, and it's black pigmented bacteria, and it's very important because it's the one which is very much responsible for pathogenesis. Next we have bacteroides intermedius, which is Prevotella intermedius. So I think bacteroids have been termed into Pyphoromonas or Prevotella. Then we have bacteroids melanogenicus, which is also termed as Prevotella melanogenicus. This is two black pigmented bacteria and common in Down syndrome. Additional information for Down syndrome, bacteroides melanogenicus. And then we have Vollinella recta, which is called as Campylobacter recta. Gingivosis, which is desquamative gingivitis. Okay, so desquamative is not a simple gingivitis, it's autoimmune gingivitis. Then we have
periodontitis, which is juvenile periodontitis. So juvenile, which is occurring in early years of life, that is periodontosis. Okay, so different names you should know, have idea. Then we have another table of disease and immune response, that which disease will elect which type of immune response, what type of cells will be activated. So talking about first very important one, which is the ANUG, that is acute necrotizing ulcerative gingivitis. It will have an immune response, and here we have elevated antibody titers to intermediate sized spirochetes and P intermedia. This straightforward question will be asked कि एनग में कौन सा ऑर्गेनिज्म है, स्पायरोकीट्स हैं, पी इंटरमीडिया है. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. एनग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन एडल्ट पेरिडोंटाइटिस, वी हैव एलिवेटेड एंटीबॉडी टाइटर्स टू पी जिंजिवालिस एंड अदर पैथोजन. सो एडल्ट में पी जिंजिवालिस काफ़ी ज़्यादा मिलेगा. इसके अंदर बॉडी में इम्यून जो रिस्पॉन्स है दैट विल बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी and occurrence of immune complexes in the tissue. So there can be immune complexes and there will be cell mediated immune response. Next we have LGP, in which we have, okay, so here gonna have elevated antibody level to actinomycetes, actinomycetum comitans, and polymorphonuclear chemotactic and pathogenic defects. Very much important. Then GJP have elevated antibody titers to P. gingivalis and PMN chemotactic and phagocytotic defects. So can you see that P. gingivalis has come up very frequently. So you should know about P. gingivalis, which is also called as bacterial gingivalis. So P. gingivalis in GJP and P. gingivalis in adult periodontitis also. P intermediate and spirochetes are in the ANUG, and actinomycetum comitans is in LGP. So very much important. Now RPP, we have elevated antibody levels to severe gram negative bacteria and PMNs or monocyte chemotactic defects, and in these committed gingivitis and autoimmune antibodies resulting from pemphigus, pemphigoid and lichen planus. So different types of organisms for different things, very important. ANUG is having spirochetes and P intermedia. Adult periodontitis is having P gingivalis, whereas GJP is having P gingivalis. LGP is having actinomycetes, actinomycetin comitans, and RPP is having gram negative bacteria, and desquamative is because of pemphigoid, pemphigus, lichen planus. Now point number 13, Bacterionema, Veillonella, diphtheroids have ability to form intracellular apatite crystals. They do have ability for forming crystals. So intracellularly crystals, apatite crystals formed by Bacterionema, Veillonella, diphtheroids. Point number 14, the initial colonizers of the members of yellow and purple complexes and secondary colonizers fell into green, red, orange complexes. Okay, so let me tell you a very different term. We're talking about colonization. Okay, so first of all we have initial colonizers which will just set up on the sugars and all those stuff. Like what happening, plaque formation is happening. So initially हमारे पास प्राइमरी कॉलोनाइजर्स आते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज़ हो गया, ये सब हमारे इनिशियल कॉलोनाइजर्स होते हैं. तो ये येलो और पर्पल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इनको हम, येलो पर्पल कॉम्प्लेक्स. इनके ऊपर हमारे पास जो है सेकेंडरी कॉलोनाइजर्स आते हैं. ठीक है, जो प्राइमरी कॉलोनाइजर्स पे अटैच होते हैं. ये जो सेकेंडरी कॉलोनाइजर्स होते हैं ये ग्राम नेगेटिव रहते हैं. मेनली फूजोबैक्टीरियम, कैप्नोसाइटोफेजा, पी जिंजिवालिस, पी इंटरमीडिया, ये सब होते हैं. ये जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स ये ग्रीन और ऑरेंज और रेड कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं. ठीक है, सो अब हम आपको कॉम्प्लेक्स के ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताएंगे कि येलो कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कौन से हैं. माइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस के हैं सारे के सारे येलो में, और पर्पल में हमारे पास एक्टिनोमाइसिटीज़ और वेलिनेला के हैं. रेड, ऑरेंज और ग्रीन कॉम्प्लेक्स में हमारे पास डिफरेंट है. ठीक है, रेड में हमारे पास पी जिंजिवालिस आता है. ये आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा, बिकॉज जो रेड कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ व्हाट
much related to bleeding, because sometimes on probing bleeding occurs. So the complex very much related is red complex. So you should know P. gingivalis, T. dentolica, and you should know this B. forsythus. Then orange complex is having P. intermedia, C. rectus, F. nucleatum, and green complex is having actinomycetes, actinomycetin comitans, कोरोडेंस एंड कैप्नोसाइटोफेजा. ठीक है, जो सबसे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफ़िकल्ट हैं, वो ग्रीन में आता है. ठीक है, जो नॉर्मल हमें पता होते हैं थोड़े बहुत, पी इंटरमीडिया हो गया, न्यूक्लिएटम हो गया, वो ऑरेंज में आता है. रेड में हमारे पास सबसे बेसिक होते हैं, याद करनी है, जिंजिवालिस हो गया, डेंटोलिका और फॉर्सिटस. रह गई बात येलो की. येलो में सारे स्ट्रेप्टोज हैं, आइदर माइटिस, सैंग्विस और लैरिस. और पर्पल में हमारे पास एक्टिनोमाइसिटीज है. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सेस हो गए. Red complex is important because it is associated with bleeding on probing, and it is an important feature of periodontal destruction. So that's why the red is important. Now talking about some of the inorganic complexes, like what do we have in the calculus? What is our inorganic portion? So it comprises mainly of 70 to 90% is inorganic, which is having phosphates, calciums and carbonates. And calcium phosphate is very much in the number, because calcium phosphate is having a lot of things. Okay, then we have crystalline forms of calculus like hydroxyapatite, magnesium whitelockite, octacalcium phosphate, brushite. All these are crystalline forms. Like if the question is asked, tell us about the crystalline forms of calculus and their percentages. So it can be hydroxyapatite is the highest in number, like 60%. Then whitelockite is 20%, brushite is 9%, octacalcium phosphate is 20%, 12%. So which of the following crystal form is least found? That is brushite. And you should know about supragingival calculus contains hydroxyapatite and octacalcium phosphate most commonly. Supragingivally, if you take up the calculus and see, you will see hydroxyapatite and octacalcium phosphate. And talking about brushite, it is very much common in mandibular interiors, and magnesium whitelockite is in posterior areas. So if area specifically it is asked, tell us about the calcium crystal, calculus crystal, which is in anterior region, you will say brushite, and it's least. And if somebody asks posterior mandibulars, or talking about just posterior areas, you will say magnesium whitelockite. So area specifically we have different crystal forms of calcium. So I think it is sufficient for the today's video. I'll be discussing furthermore in the next video. So if you like it, do subscribe and consider subscribing and hitting the notification bell. And if you have any doubt, you can just write in the comment section below, and I'll just possibly try to answer it. So thank you, and I'll meet you in the next video. Bye bye.